so this is my version of Latina makeup. I know I am late क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, but I so wanted to do this, so here I am with a tutorial. Already स्किन केयर कर लिया था तो डायरेक्टली प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ. Also please ignore my उल्टा टॉप. I did not realize at all that I was wearing it inside out. Skin prep करने के बाद I'm starting with my eyebrows first. Latinas always have that snatched and sharp brows, and I'm trying to recreate the same using eyebrow powder and then cleaning and defining it with the concealer. साथ में eyelids को भी prep करूँगी. लेकिन कंसील करने के बाद मेरे eyebrows एकदम शिनचैन जैसे हो गए थे. Trust the process guys. फिर eyelids को पाउडर से सेट करने के बाद for my eyeshadow I'm taking two different shades of brown. अब बेस के लिए you should use medium to high coverage foundation for this makeup. Though the MAC one is not इतना high coverage, but मेरे पास तब यही था, so I'm using it only. But next I am using a fully high coverage concealer because I need more coverage. बस कुछ specific points पे apply करूँगी. Blending it with a brush क्योंकि ज़्यादा coverage मिलता है इससे. Now after patting and blending it properly, सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 kg मेकअप लगा लिया है. It looks kind of scary, but trust me guys, ये ठीक हो जाएगा बाद में. Now the Latina look does include lots of contouring and they usually have really defined and sharp features. And so मैंने अपने nose contouring में बहुत ज़्यादा focus किया है using this technique to achieve that similar kind of look. And of course उसके बाद using concealer to highlight and define the nose bridge and the tip in a round shape for a lifted effect. And फिर cheekbones and jawlines को contour करूँगी. Next I am baking my face with a loose powder. Using this under my eyes, cheekbones, sides of the nose, chin and around my mouth. अब मैं फिर से eyeshadow apply करूँगी crease पे, outer V पे, then eyelids पे and lastly lower lash line पे. Now a sharp dramatic wing eyeliner is one of the key element to this look. So I am using a liquid eyeliner to create that perfect precise wing eyeliner. And I think this looks so pretty and I absolutely love it. And फिर मैं brush off कर रही हूँ excess powder को using powder contour to set the cream one and थोड़ा और sculpted look के लिए contouring the nose as well. Applying blush using the lifted technique. cheekbones के थोड़ा ऊपर blush लगा फिर sweep the blush upwards. That's it. And मुझे वो pink color थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने फिर से 2 शेड को मिक्स करके अप्लाई किया. फिर मैं एक डार्क ब्राउन शेड के साथ लोअर लैश लाइन को स्मच कर रही हूँ. Another important part of this makeup look is dramatic eyelashes. I'm kind of scared because I'm gonna apply lashes after years and I hope I don't ruin this gorgeous makeup. उनके लैशेस में काफी गैप्स रहते हैं जितना आई नोटिस, सो मैं कुछ सिमिलर सा यूज कर रही हूँ. एंड मैंने ये मिस क्लियर का आईलैश ग्लू यूज किया. एंड फाइनली मुझे इस पॉइंट पे रियलाइज हुई कि मैंने उल्टा टॉप पहना है. Anyways, I am using mascara now and this one is from Maybelline. And finally it's time for my favorite part, highlighter. Highlighting the cheekbones, brow bones, bridge of the nose and the tip. And finally look को complete करने के लिए लिपस्टिक लगा रही हूँ. I am using 2 different shades. Though I wanted to use a darker shade to outline my lips, but couldn't find that. But it's okay, ये भी अच्छा ही लग रहा है. And yeah, this is the final finished look.